are now increasingly subjected to Islamophobia, which is going to have consequences unless it's addressed. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन किराम, इस छोटी सी वीडियो को पूरा देखिएगा और इसको स्किप मत कीजिएगा ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो सके कि हम कितनी बदनसीब कौम हैं कि वो लीडर जिसने दुनिया में इस्लाम और मुसलमानों का मुकदमा लड़ना था, इसे हमने किस तरह छोटी छोटी अदालतों में फंसाया हुआ है। बहुत अफसोस होता है इतनी नफरतें देखकर, कब तक हम जाहिर रहेंगे। नाज़रीन किराम, ज़रा सोचिए कि ऐसे लोग जो दुनिया में इस्लाम का नाम बुलंद कर सकते हैं, जो दुनिया में इस्लाम और मुसलमानों का मुकदमा लड़ सकते हैं, उनको हम किस तरह ज़लील ख्वार करते हैं। और ये कौन लोग करते हैं जो कभी दुनिया में जाकर आलम इस्लाम की बात भी करने के काबिल नहीं है, जिन्हें कभी मुसलमानों का और इस्लाम का मुकदमा दुनिया में नहीं लड़ा। ये सब वो लोग करते हैं। फिर हम कहते हैं कि ये अमेरिका की साजिश है, ये यूरोप की साजिश है। ज़रा सोचिए ये किन लोगों की साजिश है। ऐसी साजिशें हमेशा हम मुसलमान खुद ही करते हैं और अपने मुल्क में करते हैं। और जो हमारे मुल्क के लोग इस काबिल होते हैं कि दुनिया में अपनी आवाज़ बुलंद कर सकें, दुनिया में अपना मुकदमा लड़ सकें, इस्लाम और मुसलमानों का मुकदमा लड़ सकें, उनको हम जीने के काबिल भी नहीं छोड़ते। और बिल्कुल यही इस वक्त भी हो रहा है। ऐ मुसलमानों, ऐ मेरे वतन के लोगों, आंखें खोलो और देखो कि ये कौन है, ये कौन लोग हैं जो ऐसे काम करते हैं। आप सुनिए इमरान हाँ की ये बातें, तो आपको अंदाज़ा होगा कि वो वाकई एक अजीम इंसान है। वो एक बड़ा लीडर है जो मुसलमान और इस्लाम का नाम दुनिया में बुलंद कर सकता है। और कौन लोग हैं जो इसकी राह में रुकावट हैं, कौन लोग हैं जिन्होंने इसको इस राह पर डाल दिया है कि वो बेचारा अदालतों के चक्कर काटता रहे। Are now increasingly subjected to Islamophobia, which is going to have consequences unless it's addressed. Consequences because we all know that marginalization of any community leads to radicalization. I have seen Pakistani community in England marginalized in Manchester, areas of Manchester and in Birmingham, and we have seen radicals coming out of these communities, and we have seen the same process in Europe because of Islamophobia. So I just want to take this opportunity to address this issue. The biggest damage done to Muslims is that after 9/11, terrorism was associated with Islam. So Islamic terrorism, Islamic radicals, and constantly these words were used by leaders of Western countries, explaining that 9/11 terrorists and any acts of terror that took place after that. The moment you use the word Islamic radicals, it means that there is something in Islam that produces radicals. That it's because of Islam they are being radicals. That terrorism is associated with Islam. And especially suicide bombing. Because regularly we heard these commentators saying that Muslims are indulging in suicide attacks because they will have virgins in heavens. This sort of nonsense kept going on. Just a brief, anyone who knows about history, desperate human beings throughout history have committed what are called suicide attacks. Before 9/11, 75% of suicide attacks were by Tamil tigers who were Hindus. No one talked about Hinduism having anything to do with that, with the suicide attacks. And we have watched so many films of the Japanese suicide attacks on American ships at the end of Second World War. No one blamed their religion, because religion has nothing to do with, no religion has anything to do with terrorism. Almost all terrorism is connected to politics. It's political perceived injustices that produces desperate people. But constantly, and even now, we keep hearing about radical Islam.